Good afternoon, dear students. Today our topic is once again adverbs. As in the lecture number 1, we have completed the definition of the adverb and we have also completed the usage of the adverbs, that how they are used, at which place they are used. As now we are going to start types of adverbs. I hope that you will watch that video before watching this video, because that is the beginning for this video. Once again, those who are new to here, I want to inform them that this channel is free of cost and its name is, as is indicated, Salim Sir's Academy English for All. There are 4 portions which are covered in this channel, and all the 4 have separate playlists. That is JKSSRB, All Posts, English for All, JK Bose 10th and 12th class, Kashmir University BG All Semesters, that is from 1st to 6th, and Important Literature. That is, there are separate playlists for them and you have to watch according to your need. All are necessary for everybody, but still, if you feel that you need some playlist important, you can watch that more and more. But what you have to do, you have to subscribe the channel and you have to watch the video from beginning to end, and you have to share. Also, you have to watch all the uploaded videos. Also, you have to give your feedback to what I can call your suggestions, which will be acceptable for me, because nobody in this world is perfect. One has to gain every day something new. If you have some new pointers which I have not told in any lecture, you can write that in the comment and I will appreciate you. Okay, now we are going to start our topic. That is, as I told you, that our today's topic is types of adverbs. We have already defined what is the adverb, where we can place the adverb in the sentence. Now we are going to start types of adverbs. Now here for types of adverbs, I have consulted another grammar. This is contemporary English grammar. You have not to buy any grammar, because I will consult all the grammars wherever I will feel the need, that from which our grammar is a good portion, there I will consult that one, don't worry. Now, types of adverbs. Kinds of adverbs or types of adverbs. The first one is, first of all, I have told you that adverb is that which modifies the meaning of verb, adjective or any other adverb. I have told you this. I have not repeat kinds of adverbs. Adverbs are divided into 8 kinds, or on the basis of their use. यानी कि जो adverbs हैं उनके हम मतलब मुख्तलिफ ग्रामर अलग अलग कह रहे हैं, और जो इम्पॉर्टेंट है वो 8 टाइप्स हैं एडवर्ब्स के. नंबर 1 एडवर्ब ऑफ मैनर, नंबर 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर 3 एडवर्ब ऑफ टाइम, नंबर 4 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर 5 एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, नंबर 6 एडवर्ब ऑफ डिग्री, नंबर 7 इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, नंबर 8 रिलेटिव एडवर्ब. Now we will define them one by one. Adverb of manner. Manner is known to you, इसका आपको मालूम है माना, यानी कि तरीका. An adverb used to show how an action is done, यानी कि हमें दिखा रहे हैं किस तरीके से काम की जा रही है, is known as adverb of manner. E.g. इसमें कौन कौन हम इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के लिए क्विकली, bravely,
happily, hard, fast, well, clearly, soundly, probably, possibly, evidently, unfortunately, luckily, sadly. You have seen that here mostly at the end there is ly. Example, they lived happily. Madhavi walks gracefully. She speaks beautifully. This is adverb of manner. Now adverb of place. Adverb of place, an adverb used to show where an action is done. ये हमें दिखा रहे हैं where, यानी किस जगह काम हुई है, is known as adverb of place. For example, here, there, up, down, near, below, above, away, out, in, every, via, backward, within. हाँ. Example, I went there. She stood near the gate. Please come here. Number 3, adverb of time. An adverb used to show when an action is done is known as adverb of time. In short, we show the time. यानी कि जो हमें वक्त दिखा रहा है, इसको adverb of time कहते हैं. आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से. Now, then, today, tomorrow, early, soon, settle, yet, before, late, ago, lately, daily, already, never, since, formerly. Now example, my father is not at home now, and it shows time, at this time. She will come here soon, and very soon, it shows time of the futureness. She came late yesterday, it shows the time of the past. That is called. Now, adverbs of frequency. An adverb used to show how often an action is done is known as adverb of frequency. Which shows that at which interval or at which duration the work is done. किस अंदाजे में काम होती है, इसका कहते हैं adverb of frequency. For example, once, twice, often, never, always, occasionally, again, frequently, seldom, sometimes. Example, they talked each other again. We visited Agra twice. They never go to films. Now, adverbs of certainty. मैं इसलिए आपको ज़्यादा ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको ये खुद समझ में आएगा. मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें कौन कौन है. अब है एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी. एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, एन एडवर्ब यूज्ड टू शो डेफिनेटनेस ऑफ एन एक्शन इज नोन एज एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी. यानी कि इट शोज अ डेफिनेटनेस दैट व्हेन द एक्शन हैज़ बीन डन. एग्जाम्पल, सर्टेनली, यानी कि कितना डेफिनेट है ये हमारी काम. सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, ऑब्वियसली. फॉर एग्जाम्पल, श्योरली शी लव्स मी. आई शैल सर्टेनली हेल्प यू. रमे इज ऑब्वियसली क्लेवर. एडवर्ब ऑफ डिग्री. एन एडवर्ब यूज्ड टू शो हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज डन इज नोन एज एडवर्ब ऑफ डिग्री. यानी किस हद तक हमने काम किए हैं. मिसाल के लिए वेरी, रादर, फेयरली, टू, ऑलमोस्ट, हॉर्डली, फुली, अनफ, सो, ऑल टुगेदर, नो, पिटी, एनी, पार्टली. वी हैव ईटन अनफ. I am feeling much better. He is very great. Now, interrogative adverbs. An adverb used to ask questions is known as interrogative. मैंने आपको बार बार कहा है interrogative means questions, और यहाँ भी adverb जो interrogative के लिए इस्तेमाल किया जा रहे हैं इससे interrogative adverb कहते हैं. Example, where, when, why, how.
When do you come? How long will you stay in Delhi? Where did you go yesterday? Now, relative adverbs. An adverb used to relate to clauses or sometimes or statements is known as relative adverbs. मैंने आपको पहले ही कहा क्लास क्या होता है, स्टेटमेंट क्या हो रहा है. अब बार बार ये कहना मतलब ठीक नहीं हो रहा है, बोर हो जाए बच्चे. उसके लिए आप जो सेकंड वीडियो शायद है उसमें आप देख सकेंगे कौन कौन है. वायर, व्हेन, वाई, यानी कि ये इनको रिलेट कर रहा है. हम कहेंगे कि कंबाइन कर रहा है. जैसे हम हु, हुज, होम रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी तरह ये भी काम कर रहे हैं. I didn't know where she had gone. यानी कि where. Do you know when Madhavi came here? यानी कि when. I don't know why she went to Hyderabad. That is why. अब यहाँ कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, जो आपको याद रखने हैं एडवर्ब के बारे में. ये आपको काम आएंगे. प्लीज़ वेट 1 सेकंड. Adverbs of manner answers the question how. यानी कि जो मैनर है वो हमें दिखा रहा है किसका जवाब दे रहा है, क्वेश्चन हाउ का, कैसे. Adverb of place answers the question where. जो प्लेस है वो हमें दिखा रहे हैं किस जगह. Adverb of time answers the question when. जो टाइम के हैं वो हमें दिख रहे हैं कब कोई काम हुई है. Adverb of frequency answers the question how often, यानी कितने बार. Adverb of degree gives the answer gives the question answer is the question how much or in what degree or to what extent, यानी किस हद तक कितने डिग्री होगी है. हाँ, अब है और कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं. ये साफ यहाँ नहीं आया है तो अब मैं ये पढ़ूंगा खुद ही. ए सिंपल एडवर्ब इज यूज्ड टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ब. जो सिंपल होता है वो मीनिंग करता है मॉडिफाई वर्ब की, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की. ये तो मैंने आपको डेफिनेशन में भी कहा है. एन इंटरोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. ये मैंने आपको बार बार कहा है कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है. ए रिलेटिव एडवर्ब इज यूज्ड टू जॉइन टू क्लॉजेस और स्टेटमेंट्स, जो हमने इससे पहले भी कहा है. अब आपको थोड़ा यहाँ समझना है. कुछ वर्ड्स सेम वर्ड इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव, सेम वर्ड एडवर्ब, वहाँ आपको थोड़ा मुश्किल होता है. मगर मैंने आपको बार बार कहा है कि इंग्लिश में इंडिविजुअल वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता है. वर्ड का मीनिंग कंटेक्स्ट में निकलता है, सेंटेंस में निकलता है. तो इसी तरह अब हम यहाँ देखेंगे कि कुछ वर्ड्स सेम है मगर उनकी मीनिंग अलग है एज एडजेक्टिव और एज एडवर्ब. अब मैं कुछ यहाँ रिपीट करूँगा तो आप खुद भी कुछ देख सकेंगे. राजू इज स्पीकिंग इन ए लाउड वॉइस. वॉइस आपको मालूम है वॉइस इज नाउन एंड लाउड here is adjective because it qualifies the noun. Madhavi never talks loud. Talks आपको मालूम है ये verb है, तो loud here adds to the verb that is talks, so it is adverb. यानी कि दोनों loud है मगर वहाँ as adjective यहाँ as adverb. फिर आपको मुश्किल होता है ये पहचानने में कि adverb का कौन है और adjective कौन है. इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ एग्जाम्पल आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा. कपिल इज़ फास्ट बाउलर. कपिल इज़ फास्ट बाउलर यानी कि फास्ट ने यहाँ बाउलर को क्वालिफाई किया है, यानी कि इसलिए एडजेक्टिव, क्योंकि बाउलर तो नाउन है. सीधी सी बात है. आई कैन नॉट वॉक फास्ट, यहाँ फास्ट ने वॉक को क्वालिफाई किया है, तो इसीलिए सीधी सी बात है. तो ये क्या है, एडवर्ब है. आप मुझे लग रहा है कि आप खुद भी देख सकेंगे, ये इतना तो डिफ़िकल्ट नहीं है. आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी उठा सकेंगे और फिर आप खुद ही इनको रिपीट करेंगे. आई विल वेट. हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन सी विद योर सेल्फ, क्योंकि इनको मेरे कहने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा. इनको अगर आप खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही रिपीट करेंगे, उसी से कुछ होगा. हाँ, इनको आप भी स्क्रीनशॉट उठाओ. दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, आई थिंक दैट
this is today too much. There is no doubt that the video is very short, but actually I have some work. Okay, we will make another video upon this. Still, we are lagging behind. Once again, I say you that those who are new, they should know that this channel is free of cost, and its name is Salim Sir's Academy English for All, and there are different playlists. That is, English for All is one playlist. JKSSB, where JKSSB syllabus is covered of all the posts. That is under JK Bose 10th for 12th and 10th class. There the whole syllabus is discussed in very nutshell. Kashmir University BG, all semesters from 1st to 6th, and important literature. But what you have to do, you have to subscribe the channel, and you have to watch all the videos from beginning to end, and you have to share with your relatives, with your friends, with your colleagues. Also, you have to send your feedback, because I want to change it. I want to teach you according to your views. Thanks. I hope that you will help. Okay. Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz.